Hello students, my name is Akhand Pratap Singh, Assistant Professor in Department of Civil Engineering in श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डोर्स एंड विंडोज़ के बारे में। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट डोर्स। डोर may be defined as a openable barrier secured in a wall opening. It is provided to give an access to inside of a room. डोर हमें एक्सेस प्रोवाइड करता है किसी भी रूम में। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, डोर फ्रेम एंड डोर शटर। विंडो इज ऑल्सो ए वेंटेड बैरियर सिक्योर्ड इन ए वॉल ओपनिंग। द फंक्शन ऑफ द विंडो इज टू एडमिट लाइट एंड एयर टू द बिल्डिंग। विंडो का फंक्शन है लाइट को एडमिट करना एंड एयर टू द बिल्डिंग एंड टू गिव ए व्यू टू द आउटसाइड एंड आउटसाइड व्यू प्रोवाइड करना। विंडो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, विंडो फ्रेम एंड विंडो शटर। Some technical terms is given by first is frame. It is an assembly of horizontal and vertical members. ये एक assembly है horizontal and vertical members का, forming an enclosure to which the shutters are fixed. Shutters, these are the openable parts of a door or window. ये openable parts हैं किसी भी door या windows के। Head, this is the top or uppermost horizontal part of the frame. ये head uppermost part होता है कि ये दिस इज द टॉप और अपर मोस्ट हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ फ्रेम। ये फ्रेम का अपर पार्ट होता है। नेक्स्ट इज सिल, दिस इज द लोएस्ट और बॉटम हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ ए विंडो। ये लोएस्ट और बॉटम हॉरिजेंटल पार्ट होता है किसी भी विंडो फ्रेम का, नॉट प्रोवाइडेड इन डोर्स। इनको डोर में प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। हॉर्न, दीज आर दी हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन ऑफ ए फ्रेम। ये हॉरिजेंटल प्रोजेक्शंस होते हैं फ्रेम के। रिवेट, इट इज़ द डिप्रेशन और रीएक्सेस मेड इनसाइड द डोर फ्रेम टू रिसीव द डोर शटर। Location of doors and window. The number of should be kept in minimum. The location of door and window should meet functional requirements of the room. Location of door and window according to depend करेगा requirements of the room. The door should not be kept in the center of the wall. Door को हम center of the wall में provide नहीं करेंगे। The window should be located in opposite wall. Window को हम opposite wall में provide करेंगे facing a door or another window to achieve cross ventilation. From the point of view of fresh air, a window should be located on the northern side of a room. फ्रेश एयर प्रोवाइड अचीव करने के लिए हम विंडो को नॉर्दर्न साइड ऑफ ए रूम में प्रोवाइड करेंगे, डायरेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। द सिल शुड बी लोकेटेड अबाउट 70 to 80 सेंटीमीटर अबव फ्लोर लेवल ऑफ द रूम। टाइप्स ऑफ डोर्स। Types of door may be classified on the basis of arrangement of components, method or manner of construction, working operations, metal doors also. On the basis of arrangement of component, door is divided in four types. They include four types: battened and laced door, battened, laced and brashed doors, battened, laced and brashed and frame doors, battened, laced, brashed and frame doors. So first we discuss about battened and laced door. These door consist of vertical board. ये डोर वर्टिकल बोर्ड कंसीडर करते हैं कॉल्ड बैटन्स विच आर नेल्ड और स्क्रूड टू द हॉरिजॉन्टल मेंबर्स कॉल्ड लेजेस। ऑफन द बैटन्स about 15 to 18 centimeter wide, 2 to 3 centimeter thick. Doors made with narrow battens like these have a better appearance. So in figure. Next is batten, laced and brass doors. This is a laced and batten door to which brass have been added to prevent sagging. These brass must slope upwards from the hinge inside edges of the door and they are housed with a screw notch into the ledges. Shown in figure. Next is batten, laced and frame doors. It is improved version of batten and laced doors. ये एक improved version है batten and laced doors का with provision of frame. इसमें frame भी provide किया गया। Two vertical members known as stiles are also provided. Batten, laced and brashed and frame doors same as above with extra brasses. ये भी same होता है, difference is extra brasses. Next is frame and panel door. These door consist of a frame made of stiles, a top rail, a bottom rail, and sometimes an intermediate rail. Into this framework, a plywood panel is fitted. This panel may fit into a groove or a rivet. Glazed or sash, these are provided where the visibility of the interior of the room is required. इनको provide किया जाता है जहाँ पे visibility of the interior of the room is required. Flush doors, the flush door with a frame core is a type of door which we frequently make in rural building. This door consists of a frame which has stiles, top and bottom rails and narrow intermediate rails. It is covered on each side by a sheet of plywood
Plywood covered flush doors cannot be used where they will be exposed to rain and sun. प्लाईवुड कवर्ड फ्लश डोर को यूज नहीं किया जा सकता जहाँ पे इनको रेन और सन में एक्सपोज नहीं किया जाता है. लोअर्ड डोर्स, दीज परमिट फ्री वेंटिलेशन थ्रू देम एंड एट द सेम टाइम मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ द रूम. ये वेंटिलेशन को परमिट करते हैं एंड ऑल्सो मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ द रूम. वायर गेज्ड डोर्स, वायर गेज और फ्लाई प्रूफ डोर शटर आर फिक्स्ड टू प्रोवाइड फ्री एयर सर्कुलेशन and prevent mosquitoes, flies, insect, etc. from entering into the building. Next is revolving door. These are provided only at public places to provide entrance to one and exit to other person. इसको public place में provide किया जाता है जहाँ पे एक person को enter और एक person को exit करना होता है. Sliding doors. A sliding door is a type of door which opens horizontally by sliding, whereby the door is either mounted on or suspended from a track. Swinging doors, a door with swings on a double hinge opens in either direction. Collapsible steel doors mainly provided in godowns, workshop, public window and etc. इनको mainly godowns में provide किया जाता है, workshop में या public window and etc. Rolling steel shutter door, a rolling shutter roller door or sectional overhead door is a type of door or window shutter consisting of many horizontal slats hinged together. The door is raised to open it and lowered to close it. On large doors, the action may be motorized. It provides protection against the wind and rain. ये हमको wind and rain से protection provide करता है. Mild steel seat door, mainly provided in godowns, workshop, public window and etc. It is quite strong. ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है. इसको मेनली हम गोडाउन्स, वर्कशॉप और पब्लिक विंडोज़ के तरह यूज़ करते हैं. Corrugated steel doors, exactly same as the above type except that corrugated steel sheets are welded to shutter frame instead of MI sheets. Hollow metal door, appearance as wooden door but have more strength. Metal covered plywood door, these are composite doors of plywood and mild steel and are reasonably fireproof. ये भी reasonably fireproof होता है और एक composite होता है plywood and mild steel का. Windows. Next we discuss about window. Window is comprised of two parts: window frame, sashes or shutter frame. Fixed window, a window that cannot be open, whose function is limited to allowing light to enter. This type of window is used in situation where light or vision alone is needed, as no ventilation is possible through fixed window. Fixed window में ventilation possible नहीं होता है, यहाँ इसको सिर्फ light के purpose से use किया जाता है. Pivoted window, a window having a section which is pivoted near the center so that the top of the section swing and the bottom swing out. Double hung windows, a window with two parts that overlay slightly and slide up and down inside the frame. The two parts are not necessarily the same size. Sliding windows, their shutters move either horizontally or vertically. इनके shutter horizontal में move करेंगे या vertical में. Casement window, a casement window to its frame by one or more hinges. They are used singly or in pairs within a common frame. Sash window, a sash window or hung sash window is made of one or more movable panels or sashes that form a frame to hold panes of glass which are often separated from other panes by narrow mountings. Lowered window, a lowered is a window blind with horizontal slats that are angled to admit light and air but to keep, ये लाइट और एयर को एडमिट करता है बट टू कीप आउट बट रेन, डायरेक्ट सनशाइन एंड नॉइज को बाहर रखता था. एंगल ऑफ स्लेट्स में भी एडजस्टेबल, जो एंगल ऑफ स्लेट्स होगा वो एडजस्टेबल रहेंगे यूजली इन ब्लाइंड्स एंड विंडोज और फिक्स्ड. नेक्स्ट इज मेटल विंडो. मेटल विंडोज मेड ऑफ माइल्ड स्टील हैविंग लेजर कॉस्ट एंड मोर स्ट्रेंथ. मेटल विंडोज को माइल्ड स्टील से बनाया जाता है ड्यू टू लेजर, कम कॉस्ट के कारण और मोर स्ट्रेंथ के कारण. बे विंडो, ए मल्टी पैनल विंडो विथ एट लीस्ट 3 पैनल सेट एट डिफरेंट एंगल्स टू क्रिएट ए protrusion from the wall line. Clear story window, these are provided in a room which has greater ceiling height than the surrounding room. इनको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पर सीलिंग हाइट ग्रेटर देन रहती है. कॉर्नर विंडो, दिस टाइप ऑफ विंडो हैज 2 फेसेस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड दीज आर प्रोवाइडेड इन द कॉर्नर ऑफ रूम. इनको कॉर्नर ऑफ रूम से प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे 2 फेसेस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है. डॉर्मर विंडो, डॉर्मर विंडो इज ए विंडो प्रोवाइडेड ऑन द स्लोपिंग रूफ एज शोन इन फिगर.
Gable window, it is a vertical window provided in the gable end of a pitched roof. Battened window, such window are provided over the flat roof to provide more light and air to enter the inner room. The window project above the roof level. इनको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, मोर एयर एंड लाइट्स की ज़रूरत होती है. वेंटिलेटर्स, वेंटिलेटर आर स्मॉल विंडो फिक्स्ड एट ग्रेटर हाइट. विंडो हमारे स्मॉल विंडो है, इनको फिक्स्ड किया जाता है ग्रेटर हाइट पे देन दी विंडो, जनरली अबाउट 30 to 50 सेंटीमीटर बिलो रूफ लेवल. इनको रूफ लेवल से 30 से 50 सेंटीमीटर नीचे फिक्स किया जाता है. इंस्टॉलिंग डोर फ्रेम्स, फ्रेम्स विच आर improperly built in can cause प्रॉब्लम्स लेटर व्हेन दी प्लास्टरिंग इज डन और दी डोर्स आर हंग. जब प्लास्टर हमारा डन हो जाता है, डोर्स आर हंग, देयरफॉर वी मस्ट गिव स्पेशल अटेंशन टू सेटिंग द फ्रेम्स प्रॉपरली. ए डोर फ्रेम शुड बी फिक्स्ड इन सच अ वे दैट द डोर कैन ओपन फ्लैट टू द वॉल, अदरवाइज द डोर विल फॉर्म ए लीवर टू द फ्रेम and the hinges will forced out when the door swings open suddenly. Door frames can be fixed in position either during the masonry construction or after the walling has been completed. डोर फ्रेम्स को हम फिक्स करते हैं मैसनरी कंस्ट्रक्शन के दौरान या फिर जब वॉलिंग का काम कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट इज इंस्टॉलिंग विंडो फ्रेम्स. इंस्टॉलिंग विंडो फ्रेम इज सिमिलर टू इंस्टॉलिंग डोर. इंस्टॉलिंग विंडो फ्रेम सिमिलर है इंस्टॉलिंग डोर फ्रेम्स की तरह. ए विंडो फ्रेम शुड बी फिक्स्ड इन सच ए वे दैट दिस केसमेंट कैन ओपन फ्लैट टू द वॉल, अदरवाइज द केसमेंट विल forge a lever with the edge of the wall. These can cause the hinges to be forced out when the window is blown open by the wind. Window frames can be installed after either during the construction of the walls or after walling has been completed. Thank you.